Hello dear students, I am Sunil Kumar, lecturer physics, working in Government Senior Secondary School Kalanangal. Dear students, आज ਅਸੀਂ optics ਦੇ ਵਿੱਚ reflection of light chapter discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ laws of reflection ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ray of light ਕਿਸੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When a ray of light falls on a reflecting surface, it bounces back in the same medium. The normal ਦੇ ਨਾਲ incident ray ਦਾ ਜਿਹੜਾ angle ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ angle of incidence ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ I ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ normal ਦਾ reflected ray ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ angle ਹੈ ਉਹਨੂੰ angle of reflection ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Laws of reflection ਕੀ ਹੈ? The incident ray, reflected ray and the normal to the surface of a mirror or any reflecting surface all lie in the same plane. The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Both angles are measured with respect to the normal of the mirror. Spherical mirror and its type. Spherical mirror ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? A spherical mirror is a mirror which has the shape of piece cut out of a spherical surface. कोई भी spherical surface है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ piece cut ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ spherical mirror ਹੈ। These are of two types, concave and convex. Spherical mirror ਜਿਹੜਾ ਹੈ concave mirror ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Uses of spherical mirrors. Spherical mirrors have various applications. Some applications of convex mirror are sunglasses, rear view mirrors, shaving mirrors. Some applications of concave mirror are reflector, converging of light, solar cookers, etc. Convex mirror is used as a side view mirror in vehicles in order to obtain the real image of vehicle coming behind for safe driving. Convex mirror reflect the light outwards. It's a diverging mirror, hence can be used in focusing of light. It is used as a reflector in street lamp. It is often used as a surveillance mirror. Derivation of mirror formula. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ concave mirror ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। AB is an object which is placed between the center of curvature and principal focus. A ray AD falls on the mirror, it gets reflected and passes through the principal focus. The two rays, the ray which is falling normally and the ray which is passing through the focus are meeting at point A1. So A1 B1 is the real inverted and enlarged image formed. ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ mirror formula ਦੀ derivation ਕਰਾਂਗੇ। From the figure given above, it is obvious that the object AB is placed at a distance u from P, which is a pole of mirror. P is the pole of mirror. From the diagram, we can also say that the image A1 B1 is formed at V from the mirror. मतलब object ਦੇ distance ਨੂੰ u ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ, image ਦੇ distance ਨੂੰ V ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Now, from the above diagram, it is clear that according to the law of vertically opposite angles, the opposite angles are equal. So we can write angle ACB is equals to angle A1CB1. Similarly, angle ABC is equals to angle AB1C. Both are right angles. Since two angles of triangle ACB and A1CB1 are equal, therefore the third angle is also equal. So third angle BAC equals to angle B1A1C. Therefore its sides are proportional. So AB
over A1 B1 equals to BC over B1C. Let it be equation 1. Similarly, the triangle FED and FA1 B1 are also equal and similar. So ED over A1 B1 is equals to EF over FB1. Also, since ED is equal to AB, so जिथे ED लिखा होते हैं असी AB लिखते ना. Let it be equation 2. From 1 and 2 we get BC over B1C is equals to EF over FB1. Considering that the point D is very close to P, अगर point P बहुत close है D दे, it means EF ते P F1 दोनों equal हो जाएंगे. So we get BC over B1C is equals to PF over FB1. From the diagram, BC के दे equal है PC minus PB, B1C के दे equal है PB1 minus PC, FB1 के दे equal है PB1 minus PF. उन्हें चेंज क्यों किया? क्योंकि सारे डिस्टेंस असी ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर करने हैं, सॉरी पोल तो मेजर करने हैं. ठीक है, मिरर दे विच पोल हुंदा, P इज़ द पोल ऑफ मिरर. सारे डिस्टेंस पोल तो मेजर करने हैं, इस करके P नू इंट्रोड्यूस किया गया सारे दे विच. हुण देखो सारे डिस्टेंस विच P आ गया, PC माइनस PB डिवाइड बाय PB1 माइनस PC इज इक्वल्स टू PF ओवर PB1 माइनस PF. नाउ सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ बाय साइन कन्वेंशनस, ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस भी लैफ्ट साइड ਤੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ पॉजिटिव ਲੈਣੇ ਆ, इंसीडेंट रे वाले पासे वाले पॉजिटिव ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ रिफ्लैक्टेड रे वाले पासे वाले नेगेटिव ਲੈਣੇ ਆ. सो PC इक्वल्स टू माइनस R, PB इक्वल्स टू U, PB1 इक्वल्स टू माइनस V एंड PF इक्वल्स टू माइनस F. ये सारियां वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां ते ਅਸੀਂ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिता. साढ़े को आ गया UV माइनस UF माइनस RV प्लस RF इज इक्वल्स टू RF माइनस VF. रीअरेंज कर लिए इन्हों. हम देखो RF तो कैंसल हो गया दोनों साइड्स से, तो साढ़े को आ गया UV माइनस UF माइनस RV प्लस VF. VF लैफ्ट साइड लैन का पॉजिटिव हो गया इज इक्वल्स टू 0. सिंस R इक्वल्स टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इस करके आर की जगह 2F लिख देता. ठीक है, सो वी गेट UV माइनस UF माइनस VF इक्वल्स टू 0. अगर असी सारे UV F ना डिवाइड कर लीए या इन फर्दर सॉल्व करके UV ने डिवाइड कर लीए, साढ़े को फार्मूला आ जाता 1 over F इक्वल्स टू 1 over V प्लस 1 over U. This way the derivation of mirror formula can easily be derived.